Hello everyone, welcome to our presentation on logic foundation, proposition and connectives for discrete mathematics. I am Hassan and with me are Hasnain, Abdullah and Mudassir. Each of us will cover three slides. Let's get started. Let's move to the proposition. Start with the most building block of logic, the proposition. A proposition is a declarative statement that is either true or false. Never both, never neither. For example, Pakistan is in Asia. This is a proposition and its truth value is true. On the other hand, 5 plus 3 equals 10 is also a proposition, but its truth value is false. Now, not every sentence is a proposition. Look at what time is it? This is a constant. So it was not truth value, which means it is not a proposition. In the same way, question like is it ready, commands like close the door, and opinions like biryani is the best food are also not proposition because we cannot say they are definitely true or definitely false. We usually present proposition using lowercase letters P, Q, R, and so on. Let's move to the next slide. Proposition logic. Now that we know that what a proposition is, let's talk about the proposition logic. This is the branch of logic that studies how proposition combines and relate using connectives and how their two values are determined. There are two types of proposition. First, an atomic proposition, a single simple statement that cannot be broken down further. For example, P, Islamabad is the capital of Pakistan. Second, a compound proposition. This is formed when two or more propositions are joined together using logical connectives. For example, P and Q. Islamabad is the capital and it is a city. Here and is the connective which shows that it is a compound proposition. So we move to the connectives one by one. Here are the symbols you will see throughout this presentation. Not, and, or, XOR, for if and only. Let's move to the next slide, slide number 4, which is slide number 4, negation not. The first connective is negation, written as not P. Negation simply reverses the truth value of P. If P is true, then not P is not false. If P is false, then not P is true. For example, if P it is raining, then not P it is not raining. Let's look at the truth table. When P is true, not P is false. When P is false, not P is true. It is a direct thing. One important point is here, negation is a unitary operator, meaning it is only connected in this topic, acts on just one proposition, not two. Now I will hand it over to the Hasnain who will explain and, or, and X. Assalamu alaikum. My name is Hasnain and I am here to present prepositional logics. Today my topic is conjunction, which means and. What is conjunction? A conjunction is a compound statement formed by the logical operator and. For the conjunction, let's explain by the examples. Think about the two statements. The first statement is A and second statement is B. The A statement is that 2 is an even number and B is 5 is an prime number. We can see that we know that 2 is an even number and 5 is prime number. The both statements are true. Conjunction says that both of the statements must be true, then the conjunction is true. If either one of the statement is false, the conjunction is false. If we say that 3 is a even number and 5 is a prime number. We know that 3 is not an even number, 3 is an odd number and 5 is a prime number. One of the statement is false, then the conjunction will be false. Conjunction says that for conjunction to be true, both of the statements should be true. If either one of the statement is false, the conjunction is false. We can see the truth table of conjunction. If one of the statement is false, then the conjunction is false. Conjunction says that both of the statements should be true. If the statement A is true and B is false, the conjunction is false. Or either B is false or A is true, the conjunction is false. Conjunction says that it is necessary for the conjunction to be true when the both statements are true, conjunction is true, and either one of the statement is false, the conjunction will be false. Now we will talk about disjunction. What is disjunction? Disjunction is a compound statement formed by the logical operator or. It says that only one statement is true, then the disjunction is true. Let's see it by example. There are two statements. One statement is P and one is Q. The P statement says that 5 is a prime number
and the Q statement says that 7 is an even number. 5 is a prime number. We know that 5 is a prime number and 7 is not an even number. There is only one statement true, the disjunction is true. And take another example. The P statement says that I will have coffee and Q statement says that I will have tea. We can write it as I will have coffee or tea. The both statements are true. The both statements are true and the disjunction is true. We can see the truth table of disjunction. Only one statement, we need only one statement to be true. If the statement P is true and the Q is false, the disjunction is true. If disjunction is only false, only if the both statements are false, the disjunction is false. If the both statements are true, disjunction is true. If either one of the statement is true, the disjunction is true. Now we will talk about exclusive OR. We can say it XOR. Exclusive OR is only true when we have only one statement exactly true. If the both statements are true, the exclusive OR is false. And when the both statements are false, the exclusive OR is false. We need exactly one statement to be true. Let's take an example. The statement P says that I will travel by bus and the statement Q says that I will travel by train. We can write it as I will travel by bus or train, but not both. We can travel on one thing at the same time, on bus or on train, but not both at the same time. The statement is true, but we need only one exactly statement to be true. Exactly one statement to be true. We can take another example. The example says that the scholarship will be awarded on the basis of academics, or the scholarship will be awarded on the basis of sports. There is a student. A scholarship will be awarded to the student on the basis of academics or sports, but not the both. Not the both. A student will be good in academics or a student will be good in sports. The scholarship will be awarded on one thing. We need only one exactly statement. If one of the statement is exactly true, the XOR is true, and one of the because we need only one statement, we will focus on one statement that is exactly true. The truth table of XOR says that if the both statements have same truth values, the XOR is false. Because in the start we said that we know we need only one statement to be true. If the statement A is true and B is false, the XOR is true. If the B is true and A is false, the XOR is true. If the both are true at the same time, the XOR is false. Or both are false at the same time, the XOR is false. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Mudassir Kaleem. My roll number is 25133 and I go to present our discrete project logical foundation. इस तरह जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड है वो ये है कि कंडीशनल में ये होता है कि इसकी पी जो होती है वो एक शर्त होती है। मतलब कंडीशन का मतलब ये है कि एक शर्त और उसका नतीजा, ठीक है ना। पी मतलब पी को हम एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि उसका नतीजा है। अब चलो हम पहली ये स्टेटमेंट इसी को पढ़ते हैं। पी कंडीशन क्यू, if P then Q, P is the hypothesis, Q is the conclusion. False only when P is true but Q is false. अब ये स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि P और Q की कंडीशन ये है कि अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तब उसी टाइम ही ये फॉल्स होता है। मतलब इसका आंसर जो है वो फॉल्स आता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वो क्या है कि P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तब इसी का जो आंसर है वो फॉल्स होती है। तो इसी तरह आगे हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब P की स्टेटमेंट ये है कि यू स्टडी हार्ड और Q की स्टेटमेंट ये है यू पास द एग्ज़ाम। अब P जो है वो एक शर्त है और Q जो है उसका रिजल्ट है। अब इसकी कंडीशन ये बनी हुई है कि इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू पास द एग्ज़ाम। अब ये शर्त ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो इसका रिजल्ट ये है कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू है, मतलब शर्त भी पूरी हो रही है और रिजल्ट भी सही आ रहा है। इसी तरह आगे हम इसकी टेबल को देखते हैं पी क्यू। तो आगे इसका वो कंडीशन दिया हुआ है
पी ट्रू क्यू ट्रू, मतलब ये दोनों ट्रू में शर्त भी पूरी हो रही है और जो रिजल्ट है, नतीजा है उसकी वो भी सही आ रही है, ट्रू आ रही है, तो उसका ट्रू आता है आंसर। और दूसरे में ये है कि ट्रू पी ट्रू क्यू फॉल्स, पी तो ट्रू है, शर्त पूरी हो रही है, लेकिन क्यू जो नतीजा आ रही है मतलब उसकी वो फॉल्स आ रही है, तो इसका आंसर फॉल्स आता है। अब पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, मतलब पी भी वो जो उसकी कंडीशन होती है वो भी फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्यू की मतलब नतीजा सही आ रही है, जो शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है लेकिन जो नतीजा है वो सही आ रही है फिर भी, तो ये भी ट्रू होती है। अगर शर्त भी पूरी ना हो, मतलब वो भी फाल्स हो और जो नतीजा है वो भी फाल्स आ रही हो, तो इसी समय इस स्थिति में भी ट्रू आती है। तो इसी तरह तो इसका कंडीशनल का मेन मकसद इसको याद करने का ये है कि ये सिर्फ उस टाइम फाल्स होती है जब शर्त पूरी हो रही हो लेकिन जो नतीजा है वो मतलब फाल्स आ रही हो। जो इसी तरह एग्जांपल थी, यू स्टडी हार्ड यू पास द एग्जाम, यहाँ पर दोनों फुलफिल थे, शर्त भी पूरी हो रही थी और जो रिजल्ट है वो भी सही होते, लेकिन जो वो थी पी ट्रू थी लेकिन जो क्यू थी फाल्स थी। अब इसमें ये है कि शर्त पूरी हो रही है लेकिन जो उसकी रिजल्ट है वो गलत आ रही है, मतलब फाल्स आ रही है, तो सिर्फ इसी सिंपल स्टेट में ही फाल्स आती है, बाकी सब में इसका आंसर ट्रू होती है। इस तरह चलते हैं हम और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि बायो कंडीशनल में क्या ये होता है, बायो कंडीशनल का ये सीन होता है कि अगर दोनों ट्रू हों तो इसका आंसर ट्रू होता है, अगर दोनों फाल्स हों तो फिर भी इसका आंसर ट्रू होता है। बायो कंडीशनल में अक्सर मकसद इसका ये है कि मतलब ये दोनों जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या जो है दोनों फाल्स होने चाहिए। इसी दोनों सूरत में सिर्फ इनका आंसर ट्रू होता है, बाकी सब मतलब है अगर पी और क्यू इसमें एक फाल्स और एक ट्रू हो फिर इसका आंसर फाल्स आता है, क्योंकि दोनों मैच नहीं, एक ट्रू एक फाल्स है। बायो कंडीशनल का असल इसका मकसद ये है कि पॉइंट ये है इसको याद करने का कि एक ट्रू हो और दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए। अगर एक ट्रू है दूसरी फाल्स है फिर ये कंडीशन गलत है, फिर ये बायो कंडीशनल नहीं बनती। बायो कंडीशन में ये है कि या दोनों ट्रू या दोनों फाल्स हैं। इसी तरह नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और क्यू ये है कि ऑल थ्री साइड आर इक्वल में है कि पी द ट्रायंगल जो उसके तीनों साइड बराबर होने चाहिए। क्यू में भी यही है कि ऑल थ्री साइड आर इक्वल, कि दोनों मतलब फुलफिल हो रहे हैं, ट्रू हो रही है ना, तो उसका आंसर भी ट्रू होता है। इसी तरह टेबल में है पी और क्यू, आगे इसका बायो कंडीशनल दिया गया हुआ है, ट्रू मतलब मैच कर रहे हैं, दोनों एक ही है, दोनों ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू होता है। और आगे है ट्रू फाल्स, अब एक ट्रू है लेकिन दूसरी फाल्स है, तो इसका आंसर फाल्स आता है, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, एक फाल्स है एक ट्रू है। इसी तरह आगे है फाल्स और ट्रू, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक फाल्स है और एक ट्रू है, इसलिए इसका आंसर भी फाल्स आता है। अब लास्ट में है फाल्स, क्योंकि ये तो है तो दोनों फाल्स पर हैं तो एक जैसे ना, फाल्स है, दोनों एक जैसे हैं मतलब, तो इसका आंसर भी ट्रू होता है। बायो कंडीशनल में इसमें होते ही है ना कि या तो दोनों ट्रू होनी चाहिए या तो दोनों फाल्स होनी चाहिए, इसी तरह इसका आंसर भी सेम होता है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट ये है कि पहले हम पढ़ा है ना पी और क्यू का एंड गेट वगैरह, आर वगैरह, कि पी और क्यू उसमें आर वगैरह कैसे होता है और एंड कैसे होता है, एक्स आर कैसे इस तरफ लगे होते हैं, और कंडीशनल बायो कंडीशनल जो कि अभी हमने पढ़ा है। पहले लिखा और पी क्यू और आगे है नेगेशन पी, आगे है पी और क्यू, आगे इससे पी आर क्यू, आगे इसका पी आर क्यू का एक्स आर दिए हुए हैं, फिर इसकी कंडीशनल है, फिर आगे इससे बायो कंडीशनल। नेगेशन पी क्या मतलब है, जो पी की अपनी असल स्टेटमेंट होती है ना उसका उलट होता है। अगर पी ट्रू है तो ये जो नेगेशन आया है ना ये उसको उलट कर देती है, ट्रू है तो फाल्स है, अगर फाल्स हो तो ट्रू कर देती है। अच्छा में नेगेशन का मतलब ये है। इससे आगे है पी और क्यू मतलब एंड में कैसे काम करती है, एंड में ये है कि पी और क्यू दोनों ट्रू होने चाहिए, ये नहीं कि एक ट्रू एक फाल्स हो। एंड का मतलब ये मकसद ये है कि वो कहता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ये नहीं कि एक फाल्स हो एक ट्रू हो, तब उसका आंसर फाल्स आता है। अगर दोनों उसकी शर्त पूरी हो रही है, दोनों ट्रू हैं, तो फिर उसका आंसर ट्रू होता है। इस तरह आगे है पी आर क्यू, और ये कहती है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ जाए तो इसका आंसर ट्रू आता है। तो इसी तरह आगे है पी और क्यू का जो है एक्स आर का मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ एक ट्रू होनी चाहिए,
अब ये नहीं कि ना तो दोनों ट्रू होनी चाहिए ना तो दोनों फाल्स, एक फाल्स होनी चाहिए एक ट्रू, तब इसका आंसर ट्रू होता है। अगर दोनों फाल्स हों फिर इसका आंसर फाल्स आता है, अगर दोनों ट्रू हों फिर भी इसका आंसर फाल्स आता है। इसकी सिर्फ ये पॉइंट है कि एक्स आर का कि एक मतलब डिफरेंट हो, सेम ना हो, या तो ये वो डिफरेंट हो मतलब है सेम ना हो, जिस तरह वो है कि दोनों फाल्स हो ये दोनों ट्रू, इनका आंसर फिर इसी सिमत में फाल्स आता है। अगर दोनों फाल्स हो फिर भी आंसर फाल्स आता है, अगर दोनों ट्रू हो फिर भी आंसर फाल्स आता है। अगर फाल्स एक फाल्स हो मतलब पी फाल्स और क्यू ट्रू हो फिर इसका आंसर ट्रू हो रहा है, क्योंकि इसी की पॉइंट ही यही है एक्स आर की, एक फाल्स हो एक ट्रू हो। इसी तरह आगे है कंडीशनल, जो कि अभी हमने पढ़ा है। कंडीशन का मतलब ये है कि एक शर्त, जिस तरह हमने रियल लाइफ से एग्जांपल दी हुई इसकी कि पी जो होती है वो शर्त है और क्यू इसका नतीजा है, मतलब शर्त पूरी हो रही हो और इसका रिजल्ट भी सही आ रहा हो फिर इसका आंसर ट्रू बनता है। अगर ट्रू हो मतलब ये शर्त पूरी हो रही है और रिजल्ट भी इसका सही आ रहा है फिर इसका आंसर ट्रू हो रहा है। अगर पी जो है शर्त मतलब शर्त पूरी हो रही है लेकिन जो उसकी नतीजा है वो गलत आ रही है, अब आपने मेहनत किया लेकिन पास नहीं हुए फिर भी मतलब शर्त तो आपने पूरी की है, जिस तरह से एग्जांपल दी इफ यू स्टडी हार्ड देन यू पास द एग्जाम, अब आपने मेहनत की लेकिन फिर भी आप पास नहीं हुए तो इसी तरह इसका आंसर इससे फाल्स आता है। अदरवाइज अगर दोनों ट्रू हों मतलब ये शर्त पूरी हो रही नतीजा भी सेम हो फिर इसका आंसर सेम आता है। जिस तरह आगे चलते हैं बायो कंडीशन, बायो कंडीशन में ये होता है या तो दोनों ट्रू हों या तो फाल्स, मतलब सेम डिफरेंट ना हो, एक ट्रू और एक फाल्स। अगर एक ट्रू हो एक फाल्स हो फिर इसका आंसर फाल्स आता है। अगर दोनों ट्रू हों फिर भी इसका आंसर ट्रू होता है और फाल्स हों दोनों फाल्स हो फिर भी इसका आंसर सेम होता है, मतलब दोनों मैच होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट पी और क्यू। इसी तरह पी भी ट्रू होनी चाहिए और क्यू का भी ट्रू होना लाजमी है। तो इसी तरह हम यहाँ पे एंड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला खलील और माय रोल नंबर इज़ 25103229 और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वर्स को। कन्वर्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर P implies to Q है, यानी कि P implies to Q की कंडीशन है, तो हम P और Q दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं। P को Q पर बदल देते हैं और Q को P पर बदल देते हैं। इसकी एग्जांपल है इफ़ अ कंपनी इन्वेस्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, ये P है, देन इट ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीजेस, इट इज़ इक्वल टू P implies to Q, देन वी चेंज Q to P and P to Q. P comes at last and Q comes at first. Q पहले आ जाता है और P बाद में जाता है। हम जो है इस ऑनलाइन विजिबिलिटी वाले को Q को पहले आएंगे। इफ़ अ कंपनीज ऑनलाइन विजिबिलिटी इंक्रीजेज देन इट इन्वेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती है, हो सकता है कि ये ना भी ट्रू हो सकता है कि कंपनी की जो है विजिबिलिटी इस वजह से इम्प्रूव हुई हो कि वो डिजिटल मार्केटिंग में उसने पैसा खर्च किया, हो सकता है कि वो किसी और वजह से ज़्यादा हुई हो, इसमें उसका डिजिटल मार्केटिंग का कोई किरदार ना हो। इस तरह है इफ़ पाकिस्तान विन्स द टॉस देन बाबर आजम बैट्स फर्स्ट, और इसका हम कन्वर्स लगाते हैं इफ़ बाबर आजम बैट्स फर्स्ट देन पाकिस्तान वॉन द टॉस। देखें अगर ये बात ट्रू हो भी सकती है, अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ये बात ज़्यादा ट्रू है, लेकिन लॉजिकल वे में देखें तो ये बात फाल्स हो सकती है। हो सकता है बाबर आजम किसी और टीम से खेल लें, ये ट्रू ना हो। इसके बाद है इन्वर्स स्टेटमेंट, यानी कि इसमें हम P और Q दोनों के ऊपर निगेशन अप्लाई कर देंगे। हाइपोथेसिस और कंक्लूजन दोनों के ऊपर नोट अप्लाई कर देंगे। इसमें हम P और Q की जगह चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उन दोनों को नोट कर देंगे। यानी कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड बिकम्स वेट, इफ़ इट डज नॉट रेन द ग्राउंड डज नॉट गेट वेट। इसकी हम एनिमेशन भी देख लेते हैं। हो सकता है कि ये बात ट्रू हो सकता है कि बात ना ट्रू हो, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये अब देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हुई, लेकिन हमने आर्टिफिशियल तरीके से जो है उसको ग्राउंड को वेट कर दिया है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है इफ़ अ स्टूडेंट सबमिट्स असाइनमेंट्स ऑन टाइम देन ही मेंटेन्स गुड एकेडमिक स्टैंडिंग। अब इसका हम इन्वर्स अप्लाई करते हैं, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट सबमिट असाइनमेंट्स ऑन टाइम देन दे डू नॉट मेंटेन गुड एकेडमिक स्टैंडिंग।
हो सकता है कि स्टूडेंट की एकेडमिक स्टैंडिंग जो है वो किसी और वजह से ना ठीक हो, असाइनमेंट उसने पूरे की हो लेकिन किसी और वजह से उसकी एकेडमिक स्टैंडिंग ना ठीक हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव में हम स्वैपिंग भी करते हैं, स्विच भी करते हैं और निगेशन भी अप्लाई करते हैं। इसमें इसकी और ये ख़ास तौर पर हम देखें हमेशा पी और क्यू के इक्वल होता है लॉजिकली। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, इफ़ यू बोर्ड द ओरिजिनल ट्रेन देन यू ट्रैवल अक्रॉस लाहौर, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल अक्रॉस लाहौर देन यू डू नॉट बोर्ड द कराची लाइन ट्रेन। यानी कि ये इक्वलेंट है, अगर हमने दोनों तरफ नोट भी अप्लाई कर दिया और कन्वर्स भी कर दिया। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अब इसके बाद हम इन तमाम टॉपिक्स की ब्रीफ समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब इसमें सबसे पहले है एंड और नॉट और एक्सोर। एंड उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे, और उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों में से एक ट्रू होगा। जो निगेशन है नॉट है ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देगा, ट्रू है फॉल्स कर देगा। और एक्सोर है अगर पी और क्यू में से दोनों में से एक में वन आ जाए तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों में वन आए तो ये फॉल्स होगा, दोनों में जीरो है तब भी ये फॉल्स होगा। कंडीशन क्या है, पी और पी इम्प्लाइज टू क्यू, ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो जाए। और बाई कंडीशनल उस वक्त ट्रू होगा जब पी इम्प्लाइज टू क्यू भी ट्रू हो और क्यू इम्प्लाइज टू पी भी ट्रू हो। और इसके बाद वेरिएशंस हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज टू क्यू, ये डिपेंड करता है उस पर कि कंडीशन पे, ये उस जगह पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद इसका कन्वर्स है, और ये हो सकता है कि उसके ओरिजिनल के इक्विवेलेंट हो लेकिन ऑलवेज इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसी तरह इन्वर्स है, ये ऑलवेज इक्विवेलेंट नहीं होता। कंट्रापोजिटिव ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है, जो कि असल लॉजिकल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज टू क्यू दी होती है। थैंक यू।